Hello and welcome back. If you've been following the news lately, then you might have heard about the VoteChori allegation that was made by Rahul Gandhi on the ECI. If you're someone who asks, or if you have someone who asks, why do I care? Then I want you guys to ask yourself or those people a simple question. What makes you valuable in a democratic country? Why do these politicians come knocking at your door every year, doing the campaigns, making manifesto? Whether they deliver it or not is a secondary thing, but why do they do that? Why do they come to you? Because you have the power to vote. What happens if that vote is rigged, if that process is rigged? At the end of the day, you won't hold much value to those powerful people, because then they can claw to power, they can remain in power without your vote, without your support. So, whether you like Rahul Gandhi or not, whether you support Congress or not, whether you support BJP or any other party, as a citizen, one thing we all should agree on is, or well, not one thing, few things we all should agree on is: first, every Indian citizen should have right to vote. Second, the whole voting process should be fair and equally accessible to everyone. Whoever wins the majority has the right to govern afterwards, but the process itself should be fair and free. And then, um, obviously, everyone should have one vote only. So, I'm going to explain. When I was thinking about making this video, I had a couple of ideas in mind. First, I thought I'm gonna make one long video explaining everything that has happened so far. But I realized it's gonna be a very long video. Maybe it will take, maybe it's gonna exceed 1 hour or 2 hour, because there's a lot that has happened. So what I eventually decided, or what I finalized, is I'm going to make these videos in different parts, and as the story evolves, as it's still evolving, we're hearing new things every now and then. So I'm going to keep making this part on, explaining what has happened or what's the update on this whole allegation. Now, I've tried doing my research on my end, so if you find any mistakes, please know that it's not deliberate. Feel free to let me know in the comments if I made mistake, and I'll try to acknowledge that maybe in the next part that I'm going to make for this, in this series. So in this particular video, I'm gonna try to cover 3 to 4 things. First is what I call building suspense, wherein the leader of opposition Rahul Gandhi have speaked about the Maharashtra election, and then how he gave that, while talking to the press, to the reporters outside the parliament, how he claimed that he had the open and shut proof. Then we're going to talk about the allegation itself and the initial response from ECI and BJP both. I'm gonna put this over here. Okay, so let's just start with the first section, which I call building suspense. So this has started back in 3rd of Feb 2025. That's the first time I think Rahul Gandhi have spoken about this election rigging on such a large stage. While giving his speech in Lok Sabha, he said this. Vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this House some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra.
meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, suddenly. The most interesting part is, Sir, Maharashtra mein more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। Okay, so two things he talked about. First, a lot of population has been added suddenly to the electoral list. And then second, he said multiple voters added to or showing in one place, which kind of corroborates with what he alleges further also during the allegation or during the press conference that he does, which we're gonna talk about in a minute. So that's the first time when he, I think, when he spoke about this on such a big stage. And then 6 months after this, on 1st of August, he talks to reporters outside the parliament and says this. और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। Okay. So, and this happened on 1st of August, as I said, outside the parliament building. Rahul Gandhi claimed open and shut proof.
warned election commission officials from top to bottom that they would not be spared, even if retired, calling it treason against India. And I think by this time, the response from election commission was that these were baseless claims and they were dismissed as baseless. Now, next event happens on 7th of August, and this happens in the AICC headquarters in Delhi. This is where Rahul Gandhi accused election commission of a criminal fraud and collusion with BJP to steal elections. Claimed EC is destroying democracy by not providing electronic voter data and CCTV footage. We'll discuss about this little bit in details, but I'm gonna play the video. So he has done a press conference on 7th of August. It's a long press conference. I'll provide you the link. So if you wanna go through it, if you just wanna sit and watch that, which I would recommend, please do that. But on the next day, I guess he released a short video kind of summarizing what all he accused the election commission of and what are the ways that he found that through which the vote chori was being done. परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। Okay, so this is true. The Election Commission of India um, doesn't provide the digital copy of the electoral list, which I think they have it, but they just don't want to share. And I'll tell you why I think they have it. And if you have followed the press conference by Anurag Thakur, then you might know already why I think they have it. And second, about the CCTV footage. The previous ECI commissioner said that it would take thousands of years for a person to go through all those videos. So why do they want it? But which doesn't make sense. There are softwares, people can look at this specific section. They don't need to just sit and watch the whole thing. They can assemble a team to do that. So that response was absurd. Yeah, one of the reason that they were asking for CCTV, because in last 1 or 2 hours of voting, there was sudden spike in the voting. So that's the reason that they asked for the CCTV footage, which Election Commission of India didn't provide. And also on top of that, they came with a rule that the CCTV footage would be deleted after 45 days, which is shady, very shady. And if you would see the process and how immediately that rule passed, I think it took just 48 hours for them to pass this rule that
the footage will be deleted after the 45 days. When I think the Punjab High Court or someone filed a petition basis on this, one of the High Court, which I think it's if I remember it correctly, it's Punjab High Court. They ordered the ECI to give the footage, so, and this whole thing came into motion like in just 2 days. डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है, तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है। इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने Okay, so I think, as I said, that it is started somewhere around, or he assembled this whole team somewhere around that speech that he gave in February. That kind of corroborates with the 6 months time. But there's something I want to point out. Oh yeah, so yeah, Election Commission doesn't provide the digital data. On top of that, the physical data that is provided, it's a non-ECR data. What that means is if you scan it, you cannot just scan these copies and search. These are the non-ECR formatted data, and I have this document here that can explain a little bit better. So non-ECR optical character recognition means that the document is scanned. It may be a general that is scanned and saved as a PDF. In reality, the scanned general is added as an image to the PDF, making it unreadable to screen readers. That means even if you scan this, so some of the people ask me why it took 6 months, why they cannot just scan it through a printer. They can, but they cannot do anything with it because it's not a searchable data. So if you scan it and you will say Control F and put a name, it will not give you any data because it's like an image to the PDF, so it cannot read it. Some of the issues with the scanned documents that are non-ECR. Screen readers are unable to interact with the text as there is none. It's an image. It treats it as an image than a text. So it cannot search if you want to search for something like the house address or the name in that document. The text on the image may have contrast issues. Users are unable to search quickly for words in the content. And there may be handwritten text which can be difficult to read for everyone. All right, going back to the video. नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या I think these documents are made public, but if not, and if that's something, if you cannot find it, and if that's something that you're interested in yourself, that you want to go through these data and see it for yourself, let me know. I can put some effort to find it
and give it to you, so that you can do your own due diligence. फिर हाउस नंबर 0, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है किसका चेहरा है नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। During the press conference done by ECI, which we will deep dive into in the upcoming video, because there's a lot to go on in that, from that press conference, they did give a response to this particular thing, the house address 0, but yeah, we'll discuss about this. बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में। Okay, so this has been fact checked by India Today and some other news organizations also. So, and this turned out to be true. So, if you want to know more about this, then you can just look for that India Today article. And if you want me to provide you something, just let me know in the comments. I'll try to find it and share it with you. But yeah, just letting you know, this has been fact checked already. रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती, तो क्या शकुन रानी जी ने वोट? Okay, so Form 6 is mostly used by the new voters, mostly, somewhere between the age 18, 20, 24, the first time voters. This, if you see, her name appears on 2 different part numbers and both has been ticked, which means then she or someone on behalf of her has voted twice. ECI has rebutted that. They said they reached out to Shakun Rani and confirmed that she only voted once. However, over here, Rahul Gandhi shows that her name appears 2 times and she might have voted, or someone on her behalf might have voted twice. But after further research or people deep dive into Shakun Rani, and she kind of became popular, people found that there are 3 epic numbers assigned to Shakun Rani. What's interesting is that out of those 3 epic numbers, 2 were edited by the ECI after this particular speech, or the press conference that, not a speech, the press conference that or the allegations that Rahul Gandhi have made. So if you go to look for the epic number and you look at when it was last modified, it will show it has been very recently modified. And the one that Rahul Gandhi did not flag, there's no modification on that. Yeah. वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया, ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से
इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, I आप जो think कर रहे हो। I think there was this report that was published by, I don't remember who published it, but after the Delhi elections, they found so many votes that has been deleted for people who were supposed to be dead when they were not dead, supposed to be migrated when they didn't. So this is not the first time someone accused of the voter deletion when it shouldn't be. But yeah. गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। Okay. So, again, coming back to this. So, just to quickly summarize, that he said that the election commission is destroying democracy by not providing the electronic data, as we discussed just a bit. And CCTV footage alleged over 1 lakh fake voters in Mahadevpura, Karnataka assembly to ensure BJP win the 2024 Lok Sabha polls. Now, the 5 ways that he mentioned is duplicate voters, fake address or invalid address, bulk registration at a single address, invalid photos, and misuse of Form 6. This was an accusation, and what was demanded is to provide the digital data so they can verify it and they can, kind of prove that what they have found through this 6 months of research going through all these papers is actually true. That was the allegation. Then came the initial responses. I think while he was doing the press conference, before it ended, um, election commission posted this on their X handle or Twitter handle. I still like calling it Twitter. So they put this here. So this was addressed to Rahul Gandhi to basically ask him to declare it or take the oath. And I'll put this also. I'll put the link of this. I'll find the link of the X or the ECI post on X, and I'll share it so you can also look at it yourself. So it says the statements made are misleading. If Shri Rahul Gandhi believes that what he is saying is true, then he should sign the declaration oath as per Rule 23B or the Registration of Electoral Rules 1960 and submit the same to CEO of Karnataka by today evening itself so that necessary proceeding can be initiated. If Rahul Gandhi does not believe, then he should stop arriving at absurd conclusion and mislead the citizens of India. And then this letter is basically asking him to kind of declare the oath. What's interesting or the rebuttal for this is
the rule that they have mentioned here, 23B of Registration of Electoral Rules 1960, it only applies to the draft list. It doesn't apply to the election that has already been done. And one of the things that people pointed out is if the allegation of this extent has been made, I think the focus should have been to prove or to give the answer to people of India that those allegations are not correct by giving a rebuttal, by giving a combative, or by giving, explaining all the allegations that Rahul Gandhi have made, by giving a proper justification on those allegations and assuring people of India that these might have just been an error, and this was not, uh, deliberately overlooked or misused to rig the election. But yeah, if you want to go through it, I'll put this PDF. Also, this is the Handbook of Electoral Registration Officers. And if you go through the chapter 5 and 6, it discusses about the electoral rules, the drafts, and the final publication of electoral rules, that they only need to provide oath if the question is on the draft list that has been published. Dr. Medusa has made a video on this. I'm going to play on this. Sorry, I'm going to play that, and I'm not sure if this is going to be copyrighted, but तो ये रील चिपका दीजिए। कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें ये नोटिस थमाया और कहा कि भैया अगर इतने कॉन्फिडेंट हो तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के पॉइंट नंबर 20 विद इन ब्रैकेट्स 3 विद इन ब्रैकेट्स बी के अंतर्गत ये वाला ओथ साइन करके दो। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली फॉर द ईसीआई, देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकते तो क्या हुआ, देश तो पढ़े लिखों का है। तो हमने क्या किया, रूल्स निकाल लिए। These are the rules which the Election Commission of India is citing. सबसे पहली बात तो ये है कि it isn't really mandatory for the registration officer to ask for a signed oath, because as you can see, the rule clearly states ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि चुनाव करवाना इतनी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, किसी भी एरे गहरे नट्टू खेरे के कंप्लेंट पर आप पूरी प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं, आप पूरी प्रक्रिया में चेंज नहीं ला सकते। तो हो सकता है ये ओथ का प्रोविजन रखा गया हो। बट राहुल गांधी इज नॉट रियली एन एरा गहरा नट्टू खेरा, राइट? ही इज द लीडर ऑफ आवर ऑपोजिशन। तो इस जगह पर आपके डिस्क्रेशन का यूज आपने ऐसे क्यों किया? और उससे भी बड़ी बात, खासकर तब जब इसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो रूल नंबर 12 कहता है, Period for lodging claims and objections. Every claim for the inclusion of a name in a roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of 30 days from the date of publication of the roll in draft under Rule 10, provided that the Election Commission may, by notification in the official gazette, extend the period in respect of the constituency as a whole or in respect of any part thereof. Yani any complaint regarding the addition or deletion or anything about the electoral roll must be submitted within 30 days of the publication of the draft roll. इस 30 days के पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं राहुल गांधी एफिडेविट साइन कर भी देते हैं, तो क्या अब आप राहुल गांधी की कंप्लेंट को एंटरटेन कर पाएंगे? क्योंकि 30 दिन तो बीत चुके हैं और मुझे नहीं लगता आपने कोई ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकाला था एक्सटेंशन का। बिकॉज एंड हियर इज द फाइनल चेरी ऑन द टॉप, रूल नंबर 17 ऑफ द सेम रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 स्टेट्स, एनी क्लेम और ऑब्जेक्शन व्हिच इज नॉट लॉज्ड विद इन द पीरियड और इन द फॉर्म एंड मैनर हियर इन स्पेसिफाइड शैल बी रिजेक्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मतलब समयावधि पूर्ण हो जाने की वजह से यह कंप्लेंट अपने आप खारिज हो चुकी है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस रूल बुक की दुहाई दे रही है, वो रूल बुक खुद ही उन्हें कह रहा है कि उन्हें ये कंप्लेंट एंटरटेन करने की या इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाई आर यू आस्किंग फॉर द एफिडेविट? I mean, do you want to waste time based on a technicality, or are you actually buying time to cover up what you did? Allegedly. all right, allegedly indeed. So that was the initial response
by the ECI. And then I think while speaking to um, while speaking to press outside Panaji, let me open this one also. Yeah, speaking to reporters near Panaji, Fadnavis, Devendra Fadnavis, and his deputy Eknath Shinde on Thursday dismissed Congress leader Rahul Gandhi's allegation that the 2024 Maharashtra Assembly election were stolen. And he said this, and he said this. And Eknath Shinde said this. What was interesting in this, and one of the things that people have pointed out, is the BJP's response on it before the ECI could, or ACI officially responded, right? Because the allegations were made on Election Commission of India. So I think it came down to them, or it was their responsibility first to rebuttal what Rahul Gandhi has said. But that was one of the criticism of this whole thing, on why would Devendra Fadnavis speak on behalf of ECI. Yeah, we discussed about all these already. So these were the event that happened on between 3rd Feb and 8th August. In next video, we'll talk about the events between the from 8th August to up until the press conference that was done by the ECI, because there's a lot to unpack there, and we'll go into that in detail. Again, if I missed something, then just let me know in the chat, or if I misquoted something, provided something that is not accurate, just let me know, and I'll try to acknowledge it in the next part that I made, so everyone have the correct information. If you like this, or if you like this series, please give me a thumbs up by putting the like, clicking on that like button. Subscribe if you can, share it with other people, and support this channel, please do. And I thank you for your time if you're still here, and you take care of yourself.